Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हम लोग यहाँ पे बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से पूरी जान फूंक दी है यात्रीज को फैसिलिटेट करने के लिए। रोटी चावल छोला बहुत बढ़िया, काफ़ी भूख से त्रस्त थे, आनंद हो गया। रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता जाम हो जाता है, रास्ता बहुत कम है और पत्थर हैं रास्ते में। चलो 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 नागेन्द्रहारा यत्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। I am at Lakhanpur, the entry point of Jammu and Kashmir. A major facilitation center has been set up for Amarnath pilgrims coming from across the country. Every effort is being made for a safe and comfortable journey of Amarnath pilgrims from Lakhanpur onwards towards the holy cave. Lakhanpur Corridor, the touchdown point for Amarnath Yatris entering Jammu and Kashmir. The gateway of the Union Territory has been revamped into a multi-facility center for the pilgrims. Separate counters have been established for providing information to the Yatris. There are stalls for food, drinking water and resting facilities. A data center has been established for record of Yatris who need to undergo eKYC for issuance of RFID or radio frequency identification tags. A health center has been established with emergency medical services and COVID testing and vaccination facilities. Digital screens are installed to display tourism profile of Jammu and Kashmir. यहाँ पे 30s के प्लस लॉजमेंट सेंटर बने हुए हैं। इन केस अगर कहीं पे यात्रा रोकनी पड़ती है किसी आपदा की वजह से या किसी भी कारणवश, तो हाईवेज़ के किनारे ही लॉजमेंट सेंटर बने हुए हैं सो दैट कि यात्री को कोई परेशानी ना आए। तो इन्हीं के साथ मैं दोबारा ये जोड़ना चाहूँगा कि हमने पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ ने पूरी कोशिश की है यात्री को फैसिलिटेट करने के लिए। यात्री जो कुछ कंप्लेंट्स लेके आएंगे, जैसे फीवर है फॉर द लास्ट 2-3 डेज, किसी को इन्फ्लुएंजा है, किसी को कॉमन कोल्ड है या हु इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ कफ, तो हम उनको सस्पेक्टेड केस मान के उनका टेस्ट करवा लेते हैं। और अगर इफ़ ही कम्स नेगेटिव तो उनको हम आगे भेज देते हैं। इफ़ ही कम पॉजिटिव तो एज़ पर गाइडलाइंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसको हम होम आइसोलेट कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे साथ हमारे योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं और हम उनको पूरा योग के लिए भी यहाँ पूरा उनको बता रहे हैं। जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं उनको योग से रिलेटेड भी हर एक चीज़ को पूरा योगा सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो इसीलिए वैसे फिट होना तो ज़रूरी है क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे उनका जाना है। तो ये एक और मेडिसिन के साथ में ऐड कर रही हूँ कि हम उनको योग वगैरह के बारे में भी योगा इंस्ट्रक्टर हमारे उनको पूरा सब कुछ बता रहे हैं। After remaining suspended for 2 years due to COVID-19 pandemic, the annual Amarnath pilgrimage began on June 30th, days after a series of targeted killing of members of minority community in Kashmir by the militants. Tens of thousands of pilgrims from across India are arriving in Jammu and Kashmir to trek the slippery mountains for catching a glimpse of the holy cave at a height of 14,000 feet.
Foolproof security arrangements have been made along the entire pilgrimage route. Analysts say a peaceful and incident-free pilgrimage is an indicator of normalcy in Kashmir. Entire Yatra route is studded with many community kitchens or langars for the pilgrims. Yatris break their journey at these langars as they proceed towards the holy cave. All through the year, planning and preparation is done for setting up such community kitchens to serve top quality food to the Yatris, and they receive their blessings in return. नहीं, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सिर्फ हमने एक ही काम है, हमने घर का, अपने कारोबार का हर आदमी ने परित्याग करके हम एक ही कार्य के लिए बैठे हैं, समाज की सेवा के लिए। और इनसे लेना क्या है? पैसे तो हम लेते नहीं, बिजनेस तो करते नहीं। इनसे लेंगे दुआ। जब ये इनको अच्छा खाना लगे तभी दुआ देंगे। जब ये लोग आएंगे, अंदर बैठेंगे, आराम के साथ खाएंगे, ये तभी ईश्वर से दुआ मांगेंगे जो इनको भी कुछ ना कुछ दे दो। ईश्वर बड़ा करे, ईश्वर इनको तरक्की करे, ज़्यादा दे। This is a typical thali that's served to Amarnath pilgrims in one of the langars along the highway. This consists of rajma, dal, khatai, which is a local vegetable, chana, rice and roti. Besides that, there is kheer also, and I can tell you it really tastes very delicious. The Yatris feel at home in Jammu and Kashmir. Pilgrims savor delicacies and witness a slice of local hospitality. रोटी चावल छोला बहुत बढ़िया, काफ़ी घूमते तरसते आनंद हो गया, बहुत अच्छा लगा। बाबा के दरबार में हमें ये भोजन मिला। Bhagwati Nagar in Jammu, the base camp for Amarnath pilgrims. Pilgrims break their journey to stay here for the night before heading for Kashmir the next day. Yatris from all across the country gather for moving in the shape of a guarded convoy for their onward journey. Rajdeep Ghosh, a pilgrim from Kolkata, and his mother are among those camping at the base camp. It's their first visit to Jammu and Kashmir. Satisfied with the arrangements, they say after 2 years their prayers for making the pilgrimage have been answered. Impressed by the beauty of Jammu and Kashmir, the duo plans doing some sightseeing as well. कोविड के लिए तो बंद हो गया। देखिए ये तो अब हम कुछ नहीं कर सकते ना, ये कोविड सिचुएशन है। तो अगर सब बोल रहे सब ऊपर वाले का हाथ है, इसमें हम आपका कोई भी हाथ नहीं है। अगर बंद रहेगा ऊपर वाला का मर्जी, खुल जाएगा फिर भी ऊपर वाला का मर्जी। बाबा जी जब चाहेंगे दर्शन करने देंगे, जब नहीं चाहेंगे दर्शन करने नहीं देंगे। ये बिल्कुल उसके हाथों में, मेरे हाथ का आपका हाथ नहीं। This group of Yatris from Uttar Pradesh say God's call has brought them here. The excitement of performing the darshan cannot be beaten by occasional news of highway blockade or incidents of militancy in Kashmir.
मेरी तमन्ना पूरी हो गई, बाबा ने हम सबको बुलाया है और हम सब बहुत अच्छे से यात्रा करेंगे। और तो आपकी किस तरह की तैयारी है? आप कब चले वहाँ से, कब यहाँ पहुँचे? हम लोग 23 तारीख को चले थे, 23 को, और कल हम लोग जाएंगे यहाँ से। कल हम लोग यहाँ से यात्रा करेंगे पहलगाम से। But for many others, like Tripti from Gujarat, a nurse by profession, journey is a sacred mission also for attending the sick and infirm who might be needing medical attention along the trek. किस तरह, वैसे तो हम लोग तो यहाँ पे मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है, तो सब बुजुर्ग लोग हैं, तो अच्छा है कि उन लोगों को तो दर्शन ही करने। और मेरा तो ऐसा ही है मैं कि मैं इन लोगों के साथ इसलिए कभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे साथ में होंगे ना, तो ऑन द स्पॉट उसको जो चाहिए वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल सके। गुजरात में क्या होता है कि सब लोग पहले से ही हम लोग इतने होते हैं कि कितना भी कुछ भी क्यों ना जाए वो कहीं से भी निकल ही जाएंगे। उसको पता है कि कैसे रास्ता निकालना है, कहीं पे भी वो अटकेंगे नहीं। तो आप रास्ता निकाल ही लो, कहीं से भी निकालो। Amid tight security, pilgrims arrive in Kashmir for their onward journey through treacherous slippery mountain tracks from the longer Pahalgam route and the shorter Baltal route towards the holy cave. The terrain is difficult, but the Yatris are determined to climb their way up. Young and old, men and women. A constant threat of violence and vagaries of weather clearly not a deterrent. Most pilgrims coming from the hot plains climb to the mountains in bitterly cold conditions they have ever known. Pilgrims are prone to respiratory disorders, but the coronavirus outbreak has multiplied that threat. हम लोग यहाँ पे बाबा अमरनाथ जी की दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारी पहली प्लान तो हेलीकॉप्टर से थी, उसके बाद हमारे कई मित्र ये सभी प्लान किए कि हम लोग घोड़े पे चढ़ के जाएंगे, बट आज बाबा की कृपा से हम तीनों मित्र पैदल जाने के लिए तैयार हुए हैं और बाबा के आशीर्वाद से वहाँ पे जाके हम पहुँच के हम लोग तीनों मित्र दर्शन करेंगे। But even before the eruption of COVID, the pilgrimage was suddenly suspended days before Article 370 was abrogated on August 5, 2019. 2 days before that, the government issued an advisory asking the tourists and Amarnath pilgrims to leave Kashmir. The government says the pilgrimage has a multifaceted impact on the society of Jammu and Kashmir, and is good news for those who have been losing businesses in the last few years. The pilgrimage has always remained a strong symbol of Hindu-Muslim unity. It was a Kashmiri Muslim family that discovered the cave more than 150 years ago. The local Muslims also rescued hundreds of pilgrims in 1996 during a snowstorm that killed 200 people on the pilgrimage route. Along the route to the holy cave, the markets are run by local Muslims who have set up stalls and sell materials needed for prayers to the pilgrim.
Iqbal, a poniwala who is among hundreds of Muslims serving the pilgrims along the pilgrimage route. ये दवाइयाँ हैं सर, इसमें कुछ इंजेक्शन वगैरह हैं सर, ये यात्रियों के लिए ऊपर फ्री सेवा जा रही है सर ये। अच्छा। हाँ, रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता जाम हो जाता है, रास्ता बहुत कम है और पत्थर हैं रास्ते में। ये तो पहुंचाना है सर। अच्छा। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये पहुंचाना है। हमने सवारी छोड़ दी और ये दवाई चलाई है सर। अच्छा। ये इमरजेंसी ऊपर थी सर, इसलिए हमने ये चलाई दवाई। जो यात्री हैं वो हमारे मेहमान हैं और हमारे लोगों का फ़र्ज़ बनता है उनकी मेहमान नवाजी करना और जितना हो सके हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। मगर इसके अलावा जब सरकार को भी ये ड्यूटी है कि वो उनकी हिफाजत के तमाम तर इंतज़ामात करे, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे इंतज़ामात में जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो आम लोग हैं, चाहे उसको दफ्तर जाना है, चाहे कोई बीमार है, ख़ासकर हमारे ट्रांसपोर्टर्स, इनको किस्त देने होते हैं, इनको दूसरे टैक्सेस देने होते हैं, इनका स्टाफ होता है, ड्राइवर होते हैं, बाकी लोग होते हैं जिनको तनख्वाहें देनी होती हैं। तो जब इस तरह से इनका नुकसान होता तो ये कहाँ जाएंगे? मैं आपसे कहूँ, यात्रा जो है वो कश्मीरियों ने हर वक्त दिल से की। जब वहाँ पे उस गुफा में लिंगम दिखा उस मुसलमान को, रहने वाला पहलगाम का एक गडरिया, वो दौड़ गया उसी वक्त, मटन पहुंचा। मटन में उसने कश्मीरी पंडितों के जो बड़े बड़े हैं उनको कहा मेरे साथ आओ, मैंने आज ऐसी चीज़ देखी है जो मैं हैरान हो गया। कौन था वो? मुसलमान। कभी भी मुसलमान ने उंगली नहीं उठाई किसी धर्म के खिलाफ। But this year, more than anything else, the weather has posed a big challenge. On July 8, a massive tragedy struck on the Yatra route that brought Yatra to a halt. A cloudburst that brought water gushing down on the langars and tents near the holy cave. Water came from above and sides of the caves, and heavy rains at the upper reach. Teams of NDRF, police and other security forces quickly swung into action and started a rescue operation. "15 pilgrims lost their lives and 55 were injured. Now efforts are on to prevent such incidents from happening in the future. Digital mapping survey of cave shrine adjoining areas will be done to prevent human losses due to natural calamities. A committee constituted by the Supreme Court had fixed the number of pilgrims at 7,500 from both routes. The Shrine Board has, however, fixed the number of pilgrims for both routes up to 10,000 recently. एक बड़ी खबर चल रही थी कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। मोटे तौर पर उस समय जो हेल्पलाइन नंबर श्राइन बोर्ड का था या प्रशासन का था, उस पर 200 कॉल्स आई थी। 3-4 दिनों तक उनको ट्रैक किया गया, किसी का मोबाइल बंद था, किसी। तो आज की तारीख में हमारे पास सभी राज्य सरकारों से हम निरंतर संपर्क में हैं। जैसे अखबारों में खबर छपी कि आंध्र प्रदेश के 37 लोग लापता हैं। मेरे पास वो पत्र है आंध्र प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 35 लोग हमारे मिल गए हैं और जो 2 नहीं थे उनके नाम मैं आपको बताता हूँ, जी सुधा और पार्वती, ये भी आइडेंटिफाई हो गए। तो आज की तारीख में मैं ये बात कह सकता हूँ कि सभी राज्य सरकारों के प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर से
यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हुई तो वहाँ के डीसी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी हम लोगों ने बात की है। तो मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि अब हमारे पास अधिकृत रूप से मिसिंग की कोई जानकारी नहीं है। The pilgrimage of faith, drawing people from all parts of the country to Kashmir, is a symbol of harmony and peace for this conflict-torn region. Shivaya Yaksha Swarupaya Jatataraya Pinaka Hastaya Sanatanaya Divyaya Devaya Digambaraya Dasmi Yagaraya Namaha Om Namaha Shivaya Namaha Har Har Bole Shivaya Namaha Shivaya It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.